share the screen. एक और चीज है, जैसे हमारी infinite dimensional subspaces होती हैं, you know, in the finite dimensional spaces, by that I mean say Rn or Cn, जो भी हो, इस टाइप की finite dimensional spaces, ये रिजल्ट हम नहीं करेंगे बेसिकली कि it's always true that a set is compact as a subset of these spaces is compact if and only if it is closed and bounded. So this is true only for finite dimensional spaces. For infinite dimensional spaces, it's not true. It's never true actually. So the compact sets which are obvious in Rn and Cn, तो इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में कॉम्पैक्ट सेट्स कम हो जाते हैं, मतलब ये तो होते ही नहीं जो क्लोज्ड एंड बाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं bx equal to all x is closed unit ball, now this is a closed set, this is also a bounded set, of course it is compact in Rn। अगर मैं इसी को L2 में लूं, यही सेट है, norm यही है, लेकिन अब suppose bx being a part in L sub 2, which is an infinite dimensional space, it is not compact. जैसे I can prove it very easily because compact set, because L2 is a metric space, L2 is a metric space, therefore a set is compact in L2 if it is sequentially compact. Compactness की बहुत सारी definitions है ना, और जो सबसे general है, which is for topological spaces, वो क्या है? A set is compact. A set is compact. इसकी जो definition है most general, if every cover, a set set, let me call it C, is compact if every open cover of C can be reduced to a finite subcover. By that I mean, ये थोड़ा definition क्या बोलते हैं इसको, मतलब obvious नहीं है कि what does it refer to, लेकिन तुमने टोपोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ा होगा इसकी एग्जांपल्स के बारे में। By that I mean, C के लिए अगर कोई भी collection of open sets है, let me call U alpha, right, उसका union U और alpha A alpha, ये एक collection of open sets है, अगर ये C contained है इनके union में, then I can always find a finitely many A1, A2 up to AN such that C is also contained in A1, A2 up to A, मतलब union. So I can find I can reduce this big collection, which could be infinite, to a finite sub-collection that also covers C. So, and now we know that in a metric space, if a set is sequentially compact, then it is compact. Sequentially compact means if every sequence in C, not this is this C, has a convergent subsequence. Convergent subsequence, C is sequentially compact. और अगर metric space है,
then it means compact. तो हम दिखाएंगे ये जो यूनिट बॉल है L2 में ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं लेता हूं BX, नहीं, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है? एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है? So if I take this BX, it is all vectors belonging to say L2 such that norm of X is less than equal to 1. Then clearly, अगर मैं लेता हूँ sequence En, n runs from 1 to infinity, where En is equal to 0, 0, up 0, 1, 0, up to so on and so forth. इस टाइप की सीक्वेंस है, nth प्लेस पे 1 है, clearly इसका norm 1 है, so this is a sequence contained in Bx, right? This is a sequence contained in Bx, and अगर मैं इसका देखूं En minus Em for इसका norm, और अगर n is not equal to m, इसमें पता है इसका norm क्या है? इसका norm है, we know that it would be, norm here is summation xi का square, I runs from 1 to infinity whole raised power 1 by 2. अब अगर दो डिफरेंट nm है, उसका मतलब उसके जब मैं डिफरेंस लूंगा, इट वुड बी 1, मतलब इट वुड बी 0, फिर कहीं पे 1 होगा और फिर कहीं पे -1 होगा, क्योंकि दो डिफरेंट पोजीशंस पे 1 होगा, ये वाला वेक्टर होगा मेरा En माइनस Em टाइप, इस टाइप का वेक्टर होगा, यानी n की जगह पे 1 होगा, m की जगह पे -1 होगा, बाकी हर जगह 0 होगा। और अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ ढूंढूं, इट वुड बी 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर whole raised to power 1 by 2, that would be √2. So this would be √2 whenever n is not equal to m. It would be fixed, it won't change for any m. अगर n m के बराबर नहीं है, ये √2 है, यानी इनके डिफरेंट टर्म्स के दरमियान जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स्ड है। Therefore, En cannot have any Cauchy sequence, ठीक है ना? क्यों? Cauchy sequence में क्या होता है? As nm become very very large, then this distance जो है ये eventually छोटी होती जाएगी, would approach 0. लेकिन यहाँ पर तो fixed है, अगर different है तो कुछ भी change नहीं होता, so it means it cannot become small, therefore it cannot be a Cauchy sequence, which implies that cannot have any Cauchy subsequence. Subsequence भी नहीं, sequence भी नहीं, QR. Therefore, En runs from 1 to infinity cannot have any convergent sequence, क्योंकि हर कोई convergent sequence Cauchy होती है, तो इसमें कोई भी, which means that Bx is not sequentially compact, which means that what? Bx is not compact because X is a metric space, it's a non-homogeneous space, it's not compact. यानी compact sets जो है वो rare है infinite dimensional space. Okay, now I usually मैं ये home assignment देता हूँ, तो अगर मैं लेता हूँ ये to show that this set, चलो मैं होम असाइनमेंट देता हूँ, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ये कॉम्पैक्टनेस का, क्लोज का, अगर तुम ढूंढोगे या करोगे। तो एक होम असाइनमेंट ये है तुम्हारा, द सेट, इस सेट को हम हिल्बर्ट क्यूब बोलते हैं, हिल्बर्ट क्यूब विच इज डिफाइंड एज, इसकी और भी तरीकों से मतलब डिफाइन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसको L2 का सबसेट मान लूं, क्योंकि यहाँ पर ये इजी होगा, it is all sequences belonging to L2 such that
x sub n is less than equal to 1 by n for all n running from 1 to so on and so forth. हमें दिखाना है show that the set cube is a compact subset of L sub 2. ये कॉम्पैक्ट मतलब इसमें क्या है, ये जो पहला वाला एलिमेंट है लेस देन इक्वल टू 1 है, दूसरा वाला एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू हाफ है, तीसरा जो एलिमेंट है सीक्वेंस का वो लेस देन इक्वल टू 1/3 है, तो इट इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ दिस L2. तो तुम दिखा सकते हो बिकॉज इट्स अ मेट्रिक स्पेस, तुम्हारी हिंट के लिए, दैट इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड. सो इन अ मेट्रिक स्पेस एक और तरीका है, क्योंकि ये मेट्रिक स्पेस है, तो अगर हम ये दिखा दें C is complete and totally bounded, तो ये हो जाएगा compact, क्योंकि मेट्रिक स्पेस में compactness is characterized by this rather than being closed and bounded. तो totally bounded तुम देखोगे, complete देखोगे, उसको चेक करोगे, फिर से करोगे. So okay, let me leave it there. There is another thing, another property, what we call a uniformly convex Banach space. You know, we know that there is this property, what we call parallelogram law, that is satisfied by a Hilbert space or an inner product space. So let me do it as an exercise. लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जो उससे वीकर है, मतलब it is satisfied of course by all the Hilbert spaces but also other Banach spaces. We call that being uniformly convex. A Hilbert space is always uniformly convex. In a Hilbert space, चलो हम एक एक्सरसाइज करेंगे, चलो ये मैं कराऊंगा. Show that if norm of x is equal to norm of y is equal to 1 and if epsilon is any positive number, is given any positive number, then there exists delta positive, then there exists delta positive such that norm of x plus y by 2 is greater than 1 minus delta, implies this. अगर ये true है, such that अगर delta और epsilon की relation ये है कि अगर midpoint bigger than equal to 1 minus delta है, then norm of x minus y less than epsilon है. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a Banach space with this property is called uniformly convex. इसका solution simple है, just have to use the parallelogram law. Now by parallelogram law, मेरा Hilbert space में ये property हमेशा satisfy होती है. You know, for any epsilon you can find a delta such that whenever midpoint is bigger than equal to 1 minus delta, it would imply that x minus y must be less than epsilon. But you can also have spaces where it is true, which are not inner product. By parallelogram law, because we are talking about here Hilbert spaces, I know that norm of x plus y का square is equal to twice norm x square plus norm y square minus norm x minus y का square. So if norm of x plus y by 2 is क्या था वो x plus y by 2, right? नहीं, so if just a minute, epsilon मैं लूंगा पहले,
तो मैं लूंगा x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। So I've got 4. Okay. Now this is equal to, in this case, क्योंकि मैं ले रहा हूँ norm of x, norm of y equal to 1 also. So it will be 2 into 2 minus norm of x minus y square. That would be 4 minus norm of x minus y square. So for any epsilon, so that means norm of x plus y by 2, norm of x plus y, दोनों अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, it would be okay. Norm of x नहीं, पहले तो norm of x plus y by 2 इसके बराबर होगा. Let me, okay, पहले स्क्वायर हटा देते हैं, राइट, 2 नहीं लिखते. It would be equal to root of 4 minus norm of x minus y का square. So I have norm of x, what do I have, x plus y is equal to 4 minus norm of x minus y का square root. Right. So that means norm of x plus y by 2 is equal to 1 by 2 into norm of 4 minus norm of x minus y square. Now, for any epsilon positive with, we can find with norm of x minus y less than epsilon, we get norm of x plus y by 2 is greater than 1 by 2 into 4 minus epsilon squared. So, but I can write this as, this can be written as 1 minus root of 4 minus epsilon square. अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो यहाँ ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ माइनस, मतलब ये बड़ा नंबर होगा ज्यादा. अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो उसका मतलब ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाता है. सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, नाउ that is equal to 1 minus delta. So if we choose delta equal to 1 minus root of 4 minus epsilon squared divided by 2, then this is positive, then delta is positive, and we have the result. हम उल्टा करके इसको एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं. So because अब ये क्यों होगा less than 1? Because this is positive, because 4 minus epsilon square would be less than 4 equal to 2 square. क्योंकि हम positive number इसको subtract कर रहे हैं, हम मान रहे हैं epsilon is positive, which would imply that 4 minus epsilon square divided by 4 is less than epsilon, which implies, less than 1, which means that root of 4 minus epsilon square divided by 2 is less than 1, which implies that 1 minus root of 4 minus epsilon square by 2 is positive. Yes. We just need to show this is positive so that our condition is met. Okay. Okay, now we come to the next important topic. That's called orthogonality. तो ये हमारा मान लो अब चैप्टर के एंड तक इसी के साथ रहेगा हमारा ऑर्थोगोनैलिटी. पता नहीं मैंने क्या लिखा. तो इनर प्रोडक्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि we can think of
the geometry. We can think of, we can define when two vectors are orthogonal. क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स R3 में या Rn में या बेसिकली R3 में, वहां हम देख सकते हैं अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. यहां हम यहीं से डिफाइन करते हैं. So we define definition, two vectors in an inner product space H are said to be orthogonal if, let me say two vectors X and Y, if the inner product of X and Y is equal to 0, and we write, इसको हम ऐसे लिखते हैं, X perp Y. By that I mean इनका inner product 0 है. Now since X Y inner product is equal to Yx, अगर मैं इनका conjugate लेता हूँ, अगर ये 0 है तो conjugate 0 है, which implies that therefore if X perp Y, then Y perp X. अगर X Y को orthogonal है तो Y भी X को orthogonal है, because this relation. Also it is clear X is orthogonal to 0 for all X belonging to H. Why? Because inner product जब 0 के साथ लेंगे तो 0 होगा, जो हमने इससे पहले किया है. Because then you can write it as X into 0 plus 0, और फिर तुम यूज कर सकते हो इसकी linearity inner product की, right? But 0 plus 0 is 0, so that is X0. तो ये cancel होगा तो X0 is 0. ठीक है. तो therefore X is perpendicular to every 0, which implies that 0 or and साथ में ये भी 0 is the only vector orthogonal to itself. और कोई हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या, XX जो है नॉन नेगेटिव होता है, और ये 0 तभी होता है जब X 0 होता है. तो खुद के साथ सिर्फ 0 परपेंडिकुलर हो सकता है. नाउ एक चीज ऑब्वियस है, बड़ा ही सिंपल सा एक्सरसाइज. Also if X plus X is perp to Y and X, if X is orthogonal to Y, then it implies that it's obvious norm of X plus Y square is equal to norm of X minus Y square is equal to, दोनों बराबर होंगे norm of X square plus norm of Y square. इसको कभी कभी हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. ये उसी का एनालॉग है. बेसिकली अगर मैं वेक्टर लेता हूँ x, दूसरा लेता हूँ परपेंडिकुलर इसको y, तो x प्लस y ये होगा, अगर ना राइट एंगल्ड है. और अगर ये आपस में परप है, राइट, तो ये कह रहा है नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, ये है नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, और ये है नॉर्म ऑफ x प्लस y स्क्वायर, इसकी लेंथ. ये वेक्टर अगर x है, ये वेक्टर y है, तो ये मान लो x है, ये y है, तो ये x प्लस y होगा. तो इट्स बी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस. अगर ना हम R2 में इसको ट्रांसलेट करें तो इसलिए हम इसको भी पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं. तो मैं तुम्हें ये check this. Converse of this is not true for complex product spaces. वो तुम चेक करो. यानी अगर ये सच है तो उससे मैं ले लूं x is perpendicular to y.
रियल स्पेसेस के लिए दैट विल बी ट्रू, बट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स यानी विच आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनके लिए इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होगा. यू कैन चेक इट. ओके, कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनको आज हम करेंगे. नाउ a vector x is said to be orthogonal to a non-empty subset S contained in H, and we write, या पहले लिख देते हैं, if X is orthogonal to Y for all Y belonging to S. तो हम कहते हैं it is orthogonal to this S, X is orthogonal to S if it is orthogonal to every vector Y of S. And we write, इसके सिंपल भी हम, we write X perp S, यानी S के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ इस तरह से, मतलब फ्लोर, और इसको अगर कोई वेक्टर किसी एक वेक्टर को ऑर्थोगोनल है, ये इसके सारे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल है in R3. So such is the situation here. Okay. Now and साथ में अगर मैं सभी जमा करूं, and orthogonal complement of S denoted by S perp is the set of all vectors orthogonal to S. तो अगर मैं ऐसे सभी वेक्टर्स को जमा करूं जो हर एक वेक्टर S के साथ ऑर्थोगोनल है, तो उस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय S पर्प. क्लियरली अब ये पर्प की कुछ प्रॉपर्टीज जो हम अभी करेंगे. क्लियरली ये वाली प्रॉपर्टी, अगर मैं लेता हूं सिंगलटन जीरो का पर्प, आई विल गेट द होल ऑफ H. व्हाई? बिकॉज जीरो को हर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसके पर्प में तो बाकी सारे आ जाएंगे, ये खुद भी परपेंडिकुलर है. एंड H पर्प इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, क्योंकि जीरो ही है जो पूरे के पूरे H को परपेंडिकुलर है. B S इंटरसेक्शन S पर्प, अगर मैं कोई सेट लेता हूं उसका, सो इट वुड बी जस्ट जीरो, क्योंकि जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा उसको खुद के साथ परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं जो S के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल है. अगर दोनों में होगा तो जीरो ही खाली खुद के साथ परपेंडिकुलर है. C अगर S1 S2 का सबसेट है, it implies that S2 perp is the subset of S1 perp. ठीक है, यानी उल्टा होगा. तो ये हम दिखा भी सकते हैं. So let X belong to S2 perp. It implies that XY is equal to 0 for all Y belonging to S2, right? Which implies that okay, it means that XY is equal to 0 for all Y belonging to S1, because S1 is a subset of S2. Which means what? X belongs to S1 perp, क्योंकि X S1 के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल है. So therefore मैंने यहाँ लिया था X और मिला यहाँ पे. So therefore S2 perp मैंने यूज किया S1 as a subset of S2, and I got S2 perp, then must be a subset of S1 perp. एक और important property,
डी। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो, जब हम उसका पर्प लेंगे, इट इज ऑलवेज इट्स अ क्लोज्ड सबस्पेस, a vector subspace of H। तो उसके लिए हमें दिखाना होगा पहले तो सबस्पेस। सबस्पेस के लिए हम क्या करेंगे, let x y belong to S perp, then alpha x, लिख लो। Now for z belonging to S, alpha x plus beta y inner product with z would be equal to alpha times xz plus beta times yz using the linearity with respect to first variable of of the inner product, which would be alpha into 0 plus beta into 0, which would be 0. Why? Because this z belongs to S and xy belong to S perp, and xy are perpendicular to every element of S. तो अगर perpendicular है तो ये 0 हो जाएगा, which implies furthermore that alpha x plus beta y भी z के हर element के S के सभी elements के साथ orthogonal है. It means it must belong to S perp. So which means that S perp is a subspace. Okay, next we show that it's a closed subspace. So उसके लिए हम दिखाएंगे, नहीं अगर मुझे दिखाना है S perp is closed, मैं दिखाऊंगा इसका closure S के बराबर है. Or better still, because S is always contained, S perp is always contained in S perp closure. तो actually ये तो हमेशा होता है, S set is always contained inside its closure. तो हमें दिखाना है basically, like to show that, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ. To show that S perp is closed, it is sufficient to prove S perp closure is a subset of S closure. S perp, sorry. So let X belong to S perp closure implies that there exists a sequence Xn and runs from 1 to infinity contained in S perp such that Xn converges to X as n approaches infinity. तो ये हम बहुत बार ऐसे करते हैं. So which would imply for any Z belonging to S, Xn Z is equal to y ले लो, चलो doesn't matter, is equal to 0 for all n running from 1 to, क्योंकि ये sequence S perp के अंदर है, वो Z के हर element के साथ perp होगी, which implies that limit n approaches, क्योंकि सभी n के लिए है, कितना भी बड़ा लो तो ये 0 ही होगा. लेकिन चूंकि inner product continuous है, I can take limit inside, which is the same thing as xz is equal to 0 for z belonging to S, which implies that x belongs to S perp. We are done. So for any non-empty set, S perp is always, what I was saying, a closed subspace of our Hilbert space. Okay, और कोई property? और तीसरी important property, for any subset S contained in H, S is contained in S double perp. Okay, by that S double perp से मतलब है S perp का perp. And मैं perp उस set का भी perp ले सकता हूँ. तो S would be always a subset of S perp. That is straightforward. इसलिए तुम पे छोड़ता हूँ. And एक exercise अगर तुम करना चाहो, when will these two be equal? यानी S कब बराबर होगा S double perp, या कभी होगा भी कि नहीं? सबसेट तो हमेशा होगा.
ओके, थर्ड ये है, अब हम ट्रिपल पर्ब की भी बात कर सकते हैं. Now for any subset, this is interesting, S perp would be always contained in is equal to S triple perp. ओके, नाउ ये प्रूव करना इसकी मदद से आसान है, जो कि मैंने तुम पे छोड़ दिया. मतलब जस्ट शो दैट, टेक एन एलिमेंट हियर एंड शो दैट इट बिलोंग्स हियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ clearly by above, S perp is a subset of S triple perp, isn't it? Because let me write your name. ऐसे करते हैं. Now S is always, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, S is always a subset of S double perp by above. जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हमने की, जो मैंने तुम्हारे लिए होम असाइनमेंट की रखी, it would imply that S double perp का perp हमने एक प्रॉपर्टी की थी, must be a subset of S perp. That means S triple perp must be a subset of S perp. But also by the same property, S perp का S perp और मुझे क्या चाहिए, should be contained inside S perp का double perp. मतलब इस प्रॉपर्टी से, अब मैंने यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्या बोलते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, ये मैंने अप्लाई की टू S perp, so that is equal to S triple perp. ये हमने की वो कॉम्प्लीमेंट, अगर A is a subset of B, then B perp is a subset of A's perp. So इन दोनों को मिला के, hence S perp would be always equal to S triple perp. Okay. Okay, so that was some preliminary facts about this orthogonality, which were trivial, simple. Now we come to an important theorem. Two, three important theorems, जिससे हम ये दिखाएंगे that you can always write M. If you have हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं. If H is a Hilbert space is important, then and M is a closed subspace, any closed subspace of H, then H can always be written as M direct sum M perp. तो यहाँ हम पहुँचना चाहते हैं.